We install everything in a door pad. If you see the fit and finish of the damping in the door pad, you can see the neatness, the cleanliness, how we put damping in the door pad. All locks are empty so that the water can come out. एक और चीज़ जो माइंड में रखना होता है, we never use a so thick and heavy damping कि door hinges पे हमारा issue आ जाए within time. अगर आप भी नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं and you are thinking कि मैं 4mm 5mm damping करूँ आप और डोर की रैटलिंग बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, तो अंडरस्टैंड गाइज आफ्टर 6-7 मंथ्स दिस विल बी हैम्पर्ड. इस पे अगर वेट पड़ेगा तो बेंड होंगे तो डोर हिंजेस में प्रॉब्लम आएगी. Talking about the speaker part, you can see the fit and finish, how we installed C2 components with the help of rain guard. A fairy rain guard has been installed in the front, and this is the way how we install a crossover in each and every situation. So ये JL Audio C2 है जहाँ पे हमने crossover लगाया है. Entire complete OFC Blopung wiring. So this is the way. Though the car is approx like 6-7 years old, but though the installation is looking like it's a new car. Right now we are installing an amplifier. एक बार ये amp install हो जाता है मैं आपको आगे की चीज़ें. So this is the way how we install an amplifier, guys. You can see this is a 5-channel being installed, and this is a Musway DSP. So ये हम बहुत लोग अब कोई मैसेज करेंगे कि हम इसमें वुडन का फ्लोर या वुडन बोर्ड क्यों नहीं यूज़ करते. गाइज अगेन वुड, अगर हम वुड लगाएंगे डेफिनेटली एम्प हीट अप होंगे क्योंकि एयर पास होने का चांसेस कम है. अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म लगाना है, वी कैन यूज़ अ एल्यूमिनियम प्लेटफॉर्म जो कि एब्जॉर्ब करेगा हीट एंड वो बेनिफिशियल रहेगा. बट बहुत लोग लगाते हैं इसके नीचे वुडन पैनल, उससे हीट होने के चक्कर में बहुत ट्रिपिंग इश्यूज आते हैं. बट दिस इज द वे वेयर everything will be intact. The wiring we did, I know it's like it's a 10-year-old car, guys. थोड़ी गंदी हुई है गाड़ी, I completely accept. But this is the clean way of wiring where the speakers are being tied. Everything is being done properly. You can see the power cables are coming from the one side speaker wire, and other side we have taken the RC cable. So there is no chance of humming, hissing sound. इस गाड़ी में भी 1% भी हिसिंग नहीं है. So this is the power cable being tied. ये प्रॉपर हमने टाई बेल्ट से टाई करा है कि कोई मूवमेंट ना हो. और देख सकते हैं कैसे हमने आरसीज के ये पूरे क्लोथ फैब्रिक से हमने पूरा इसकी वायरिंग यूज़ करी है. आप देख सकते हैं इधर भी हमने यूज़ करा है. सो दिस इज़ द वे हाउ वी इंस्टॉल्ड. बाकी आपने स्पीकर की प्लेसमेंट देख ही लिया. वी हैव इंस्टॉल्ड द C1 coaxial in the rear, C2 component in the front. This is the overall fitment of the two components. Definitely guys, अगर हम JL consider करते हैं, we have to consider subwoofer as well, because इसमें mid bass बहुत कम होती है, lows बहुत कम achieve होते हैं. So we have to add a subwoofer. So ये 5 channel हमने इसीलिए लगाया. कल को अगर एक और subwoofer लगाना है तो हमें amplifier की ज़रूरत नहीं है. We can just attach this passive subwoofer with this amplifier and each and everything is okay to go. So बाकी अब चलते हैं final result की तरफ and एक कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि कैसे इसका ओवरऑल आउट. सो फाइनली द कंप्लीट इंस्टॉलेशन इज डन. द सेटअप इज डन वेयर वी हैव इंस्टॉल्ड 2 pairs of JL audio components, a Musway DSP, a Morel 5 channel, and again the subwoofer is not there. So sir, first of all आप मेरी Seltos सुनी थी 3 महीने पहले. यू आर अमेज विद द सेटअप एंड आपने वहीं सोच लिया था कि मेरे से ही सेटअप कराना है आफ्टर गेटिंग द डेमो इन माय डेमो कार. सो आज हमने एक ब्रांड लगाया मुस्वे. वी हैव यूज्ड प्रीमियम ब्रांड्स लाइक मुस्वे, मोरेल एंड जेल, टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं इन ऑडियो. सो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वेयर वी डिड अ लॉट ऑफ ट्यूनिंग. You bought the speakers by yourself and we installed it with our like complete efforts. So how was the overall feedback, sir? I should say that you're the one of the best installers in India, and I'm very much satisfied with your services. The wiring which was done in my car was accurate, done with precision. So that's what I liked the most. Okay. Wiring ball at you here, and the people who were working on my car were very professional in terms of everything, be it wiring, be it couplers, वगैरह, everything was done very neat. So I'm very much satisfied. What about the tuning part? Tuning was the cherry on the top. मजा आ गया. मतलब लगा के आपको लगा कि worth it था, because after the installation is done you wanted a spark in your setup. Now are you getting that spark? Exactly. Because you spend ₹1,00,000 overall by getting the speaker from outside country and getting it installed, getting high-end DSPs, getting good amplifiers, and again the mid bass is very strong that you don't need the boofer. Though we have added a 5-channel amplifier so that in future if you need something we can definitely add a subwoofer, but now it's not required. The clarity is top notch, the mid bass is top notch, vocals are clear,
everything is perfect with the help of the Musway. Like, do you think the Musway is a worth it product? It is. It definitely is. You spend it double the money on this entry level DSP, and after listening to it, what's your overall feedback? I'm very much satisfied with it because initially जब tuning नहीं हुई थी, I was like कि क्या लगवा sound लिया? is very bland. Right. कि मैंने क्या install कर लिया, but when you did your thing, so afterwards there is, you can say, a difference of day and night. And what about the Seltos that you heard? Oh my god. That's I would say I had a perception earlier wherein I used to think that company setups जो होते हैं जो brands करके देते हैं Kia हो गया या Hyundai हो गया, they are the best. जब मैंने आपकी Seltos सुनी थी, it changed my perception. That's where I had a thought in my mind that I'll someday I'll come to you and I'll come for a setup. The day has come. Great. So guys, understand, if you are investing money on your setup, do not see कि कुछ भी लगा लो, कुछ भी available है. Do a research on your products, then ask me whether this is a correct or not. Though buying a product from me and not is another thing, but you can definitely take knowledge, you can definitely take information from us, which is good or bad. So guys, इसी के साथ आपको अच्छा लगा, अब आपको NCS का भी रिजल्ट आएगा लास्ट में, कैसा आपको ओवरऑल इसका सेटअप है, आपको भी अच्छा लगा, फिटमेंट हमारी अच्छी लगा, you can reach out to us, you can get the installation done, you can schedule your installation. So इसी के साथ सोहेल Pruthi signing off. Bye bye, take care.